Hello, namaskar, and once again a very good afternoon to all the viewers watching our session out there. This is Simran Singh, and you are watching this particular session that is running on PMeVIDYA channel number 12. Well, we have our different mediums through which you all can be a part of our sessions. You all can converse with us in these sessions. So our YouTube channel, that is NCRT Official, and in case if you have any of the queries for another 1 hour, we are going to discuss on biology for class 12 students. The topic of discussion would be microbes in human welfare. So in case of queries, in case of doubts, do come up with us in the comment section of NCRT Official, and we'll try to include all your queries, and our expert would be more than happy to take your questions and answer them in the session itself. So providing us more guidance in today's conversation regarding microbes in human welfare, we are also joined by an expert through online modality. He is Mr. Sushil Kumar. Namaskar, sir. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. A very warm welcome in the session. Sir is Sir is PGT Biology, currently serving at Kendriya Vidyalaya, has joined in from Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh. So in this conversation, you can come up with your queries in the comment section, or either you can contact us at this contact number that is flashing on your screens. So feel free to give us a call at 88-00440559 and a specific mail ID for class 12th students. It is dth.class12@ciet.nic.in. Well, this particular session of biology is for class 12 students. But viewers from any other classes, if you have connected with us and you have any questions in your mind, any thoughts or messages that you would like to share, then they are most welcomed in our comment section. So sir, today in this conversation, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि हम बातचीत करने वाले हैं microbes in human welfare. So what are the different aspects or the pointers that we are going to discuss in this session? Yes. So hello friends, and I am hoping that you all are well. And today, since we are living in the world of microbes, and nowadays we people are facing lot of problems by the microbes. So we are already a lot of afraid of microbes because there is the coronavirus, there is the one disease is known as monkeypox related fever, or another is the tomato flu. And nowadays as the season is changing, so we people are also suffering from the that is the common cold. So my students, as you all know that we people are usually talking about the macroscopic living organism, or especially plants and animals. But there are very teeny, very small animals, or we can say the living organism that we people are not able to see with the naked eye. So these living organisms are known as microbes, and I am hoping that as you have already read about the five kingdom system of classification that was given by the Whitaker in class 11, and I am hoping that you all are very well remembering that microbes are placed in the which kingdom. So we now today we are going to discuss that where microbes are found, how microbes is affecting or how microbes are affecting our life. So let us start the journey of microbes. You will be quite surprised that microbes came over the earth a million year ago before we people have came. So they are still surviving on the earth, and they are causing lot of problems as well. They are also benefiting we pupils. So microbes are present everywhere, in soil, in water, in air, inside our body. Yes, inside our body there are billions of the microbes are found, as well as there are the microbes are also found in the other animals and plants. They are present even at sites where no other life form could possibly exist. So you cannot imagine that microbes are found at the places where the temperature is around 90 to 100 degrees Celsius. My students, you all are knowing about that places
that are known as thermal vent or natural geyser. There are some places from where the hot water spring are coming from the earth, and in the hot water spring there are microbes are found. Microbes are found in the high concentration of the carbon dioxide amount, and they are using the high concentration of carbon dioxide. They are known as capnophilic organism. So at one hand the microbes are found at the higher temperature, at one other hand microbes are found in higher amount of the carbon dioxide. Microbes are found in the high saline environment also. There are some bacteria which are known as extremophile, means they usually survive in the extreme condition like acidic condition or acidic environment, or there is the environment that is having the higher salt concentration, that is the halophilic or halophiles category of the organism. So we can say that the microbes are diverse. Microbes are found everywhere. So you have heard about the protozoa, you have heard about the bacteria, you have heard about the fungi, and as well as microscopic plant viruses. You have heard about the viroids. So we can say that we in our earth there are everywhere microbes are found. So these microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form the colonies, and these colonies can be seen with the naked eye. So I will show you some of the slides in which you will be able to see that how the diversity of microbes is found. So as you will be able to see in this slide that the microbes are diverse, like protozoa, bacteria, fungi, virus. There are the viroids. These are only made up of the nucleic acid, and there are the prions. These are the infectious proteinous particle, means they are only made up of the protein. So these all comes in the category of microbes. And as the NCIT book is concerned, so in your NCIT book there is the figure 10.1 and 10.2 in which you will be able to see the pictures of the microbes. So I would like to show all these pictures. So you will be able to see the pictures of the microbes, like one of the category of microbe that is known as bacteria. So my students, in the class 11, you have read about there are the various diversity in the shape of the bacterial shape. So the bacteria as a microbes may be rod shaped, or if they may be the spherical or round shaped, or they may be the comma shaped, or they may be the spiral shape. So there are a lot of shape is found in the bacteria, and you will be not able to see with the naked eye, and for studying or for seeing it, you have to need the microscope. On the other hand, there are the viruses, and one of the well-known virus that is known as nowadays we people are very much afraid of, that is the coronavirus. One of the virus that you have also heard about, that is known as HIV virus, or one virus that is also causing us the common cold. So these virus like, and one virus is also found in our holy river, that is the Ganga. So गंगा के पानी में एक वायरस पाया जाता है, that is known as bacteriophage. So this is the unique virus. This is we can say that it is a wonderful virus, because you have heard about that in the water of the river Ganga. So if it is infected, any bacteria being want to grow in the Ganga water,
So the bacteriophage kill that bacteria. So bacteriophage is the virus that has the ability to kill or to engulf or to destroy some bacteria. So bacteriophage is a virus and it has the ability to destroy the bacteria. So you have heard about the adenovirus, which causes the respiratory infection. Uh, you have also have read about the rod-shaped tobacco mosaic virus, TMB virus. So it is usually causing the mosaic disease in tobacco plants. So these viruses as well as bacteria can be studied, can be seen in a good way with the help of microscope that have high magnification power. So if we want to grow these bacteria or we want to grow the fungus, so we need glass plate that are known as Petri plate. So in the Petri plate, if we provide the nutritive media that is required for the proper growth of the either bacteria or fungus, then you will be able to see the different colony of bacteria as well as fungi, and you will be better way can identify the how the shape of the uh, fungal colony as well as how the what is the shape of the bacterial colony, as you will be able to see if you grow the bacteria and fungus in your lab, then you will be able to see that there is a diffuse colony is observed in case of the fungi, but there are the rounded colony in which thousands of the bacteria are found, and each colony contains thousands of the bacteria, and so much round colony you will be able to see in the Petri plate in chain-like manner. So these are the all belong to the bacterial colony. So in the chapter, in your previous chapter, that is the chapter 8, that you have read about the microbes causes a large number of disease in human being. You have read about the chapter that is known as human health and disease, in which you have studied that there are so many diseases which are caused by the microbes. They may be the bacterial disease, they may be the fungal disease, they may be the viral disease, or they may be the disease that are caused by the prions or viroid. So usually we people, when the microbes name is concerned, so we people usually think about that all microbes are harmful. But my friends, students, there are several microbes which are useful to men in diverse way, and we cannot imagine our life without the microbes. So there are a lot of benefit we people are getting from the microbes. Some of the most important contribution of microbes to the human welfare we are going to discuss in next slide. So as you will be able to see in this slide that microbes have the diverse role in our life. There are so many household products that are formed by the microbes. There are so many industrial products that are formed by the microbes, and our waste that is liberated from our home and goes into the sewage. So how the treatment of sewage being done? So it is all done with the help of microbes, and the biogas or gobar gas is produced with the help of methanogenic bacteria, or we can say the microbes. There are so many microbes or bacteria as well as fungus that are used for the biological control or biocontrol. So microbes are also used as a biocontrolling agent. There are some microbes which are used to increase the fertility of the soil without
causing any adverse effect on the soil. So these microbes are known as biofertilizer, and nowadays there is lot of emphasis, lot of concern about the how we people maybe get rid of the chemical fertilizer. And today there are a lot of research being done in terms of the biofertilizer, how the microbes as a biofertilizer can be used for fulfilling the demand of our grains, cereals, pulses, or other food products. So let us start one by one. My students, we are going to discuss microbes in household product. So सिमरन जी, आप अपने जीवन की कल्पना क्या बिना माइक्रोब के कर सकती हैं, या आप बताइए कि आप इनमें से कितनी चीजों को अपने घर में उपयोग करती हैं? जैसे कि दूध से दही बनता है आपके घर में। जी सर, बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि माइक्रोब्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी अपने जीवन की कल्पना कर सकता है बिना माइक्रोब्स के। देखिए, हमारी आपकी मदर बहुत बड़ी साइंटिस्ट होती हैं एक्चुअली। जब दूध से दही जमाना होता है तो वो देखा होगा थोड़ा सा जामन लेती हैं जी। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आधी चम्मच, और वो लूक वार्म मिल्क में डाल देती हैं, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास के गर्माहट वाले दूध में, और देखती हैं सुबह बढ़िया दूध से दही बन जाता है। अर्थात जो वो जामन मिलाती हैं वो रखता है अपने अंदर लैक्टोबैसिलस, एक रॉड शेप का बैक्टीरिया जो मिल्क प्रोटीन अर्थात कैसीन को और कोगुलेट कर देता है और कर्ड बना देता है, दही बना देता है। हम और आप लोग जब सिमरन जी बीमार होते हैं तो हमने देखा होगा कि हमें और आपको यूजुअली कुछ दवाइयां दी जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स हैं। हाँ जी। अर्थात ये बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट काम कर रही हैं। आपने भी खाई होंगी, हमने भी खाई होंगी। बिल्कुल सर। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर हमें और आपको कहते हैं कि अपने खाने में आप दही का इस्तेमाल करिए। तो एक्चुअली इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, विशेषकर जो दही में पाए जाने वाले जो कर्ड होता है उसमें जो माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं। मतलब प्रोबायोटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनको अगर मैं और आप लें तो वो हमारे शरीर में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को संख्या बढ़ाने में मदद करती है। अब जब मैं और आप कभी बीमार हो जाते और हम लोग एंटीबायोटिक काफी दिनों तक खाते हैं, 7 दिन 8 दिन तक, उसकी वजह से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारना तो उनका काम ही एंटीबायोटिक का, लेकिन साथ में हमारे शरीर में देयर आर लॉट ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो वो जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेरे आपके शरीर के डाइजेशन, विटामिन के सिंथेसिस और कई सारी प्रोसेस में मदद करते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सर बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि एंटीबायोटिक्स ये तो हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, और ख़ास तौर पर पिछले 2 साल में जी हम सब जानते हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं हमें कंज्यूम करनी पड़ी हैं, और बहुत मुश्किल रहा है पिछले 2 साल का सफ़र। तो मुझे लगता है कि सिर्फ 12th क्लास के एकेडमिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कार्यक्रम को देख रहा है तो उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियां हैं वो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सिमरन जी, हम और आप लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि दही खाइए, तो उसके पीछे यही होता है कि हमारे शरीर में अगर इन माइक्रोब्स की कमी हो गई जो कि हमारे बेनिफिशियल हैं, हमारे शरीर में बड़े सारे फायदे पहुंचाते, उनकी संख्या बढ़ाने में विटामिन B12 के साथ साथ ये जो गाइड हम लोग लेते हैं इसमें एक तो हमें विटामिन B12 मिलता है, दूसरी चीज ये प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं, अर्थात ऐसे यूजफुल माइक्रोब्स को ग्रो करने में और अच्छी एनवायरनमेंट को प्रदान करने में भी मदद करती है। और तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है माइक्रोब का रोल। हम और आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट सुबह से शाम, देखिए आज आप में से बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं या हम और सिमरन जी जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया तो हम लोगों ने उसमें ब्रेड लिया या आपने टस्क लिया या जो भी आपने छोला भटूरा लिया तो ये या इडली लिया, तो ये सारे फर्मेंटेशन से बने हुए प्रोडक्ट हैं। और फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि माइक्रोब के द्वारा होती है। तो फर्मेंटेशन में कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, वो
एक घटना करते उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। और दुनिया में सबसे पहले फर्मेंटेशन की खोज एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम सर लुइस पाश्चर था। तो लुइस पाश्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की। ही वाज द ग्रेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और उनके सम्मान में पाश्चर इंस्टीट्यूट पेरिस, जो कि दुनिया में माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ पर रिसर्च होती है माइक्रोब्स के ऊपर, वहाँ पर स्थित है। और आप में से कई बच्चे आगे चल के जब साइंस में अपना कैरियर आगे बढ़ाएंगे तो आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप या डॉक्टरल फेलोशिप के दौरान या अपनी रिसर्च के दौरान या कभी किसी न किसी रूप में आप वहाँ जाने का आपको मौका मिलेगा। तो हम और आप लोग जो वेजिटेरियन हैं, जैसे अभी हमने बताया कि वो दही लेते हैं तो उससे विटामिन B12 मिलता है, ऐसे जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए प्रोटीन के सोर्स कुछ लिमिटेड हैं, जैसे कुछ दालें हैं, और विशेषकर एक और बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का जिसे हम पनीर कहते हैं या चीज कहते हैं। तो चीज जो होते हैं दो प्रकार का, एक स्विस चीज होता है और दूसरा रॉकफर्ट चीज होता है, और ये दोनों प्रकार का जो पनीर है ये माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जाता है। सो मेरे बच्चों, now you will be able to understand what is the role of lactic acid bacteria, or that is known as lactobacillus, that is behind the converting the or coagulating the milk protein into the curd. And there is one of the very important process that is known as fermentation, that is being carried out by the microbes. And there are so many things that is done by the microbes. दुनिया में जितनी भी शराब बनती है वो सारी की सारी फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है, और चाहे कोई भी शराब हो जिसमें अल्कोहल की कंटेंट कम भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती, तो सारी की सारी बिना माइक्रोब्स की मदद से हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जो हम लोग देख सकते हैं कि हम ब्रेड जो खाते हैं सुबह सुबह, उस वो भी हमारे माइक्रोब्स के द्वारा बनती है। जो बियर है या जो योगर्ट है, जो पनीर है, जो सॉस है, ये सब माइक्रोब्स के द्वारा बनते हैं। सो हम कह सकते हैं कि कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति को मिल्क से एलर्जी होती है, ही इज इनटॉलरेंट टुवर्ड मिल्क। सो अगर वो मिल्क लेगा तो हो सकता है कि उसके शरीर में वो टॉलरेट नहीं कर पाए, लेकिन वही मिल्क को जब हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा कर्ड में तब्दील कर देते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, देन ये उनके लिए वरदान हो जाता है और वो बड़े आराम से इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो ये भी देखा गया है। सो नाउ आई वुड लाइक टू शो द bacteria that is behind the forming the curd. So these bacteria are rod shaped, and these are known as LAB, means lactic acid bacteria. So now I would like to show so many food item. सिमरन जी, आपने इनमें से बहुत सारी चीजों को सुबह लिया होगा, नहीं तो आप किसी न किसी प्रकार से अपनी डाइट में कभी ना कभी लेती होंगी। बिल्कुल सर, ये जितनी भी पिक्चर्स हमने स्क्रीन पे देखी हैं, जैसे पिज्ज़ा, डोसा, इडली, ब्रेड, ये सब मैंने इनका सेवन किया है जी। और हम और आप लोग इसलिए लेते क्योंकि इनके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, और जो इनमें एक पर्टिकुलर टेस्ट को डेवलप करने के लिए इनके पीछे माइक्रोब्स का ही रोल होता है। माइक्रोब्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। सो वी कैन से दैट द one of the microbe that is known as Saccharomyces cerevisiae, it is a unicellular eukaryotic fungus. It is known as yeast. इसे yeast कहते हैं। सिमरन जी, हम और आप लोग बाजार से खमीर के नाम से इसे खरीदते हैं जी। और इस yeast के द्वारा आपने देखा होगा जब हमारे आपके घर में हम और आप लोग या मदर हमारी और आपकी जब खाना बनाती है तो कई बार देखा होगा मैदा में ईस्ट को गूंथती हैं या आटे में, और फिर उसके बाद जो बनाते हैं उससे खाना में जो भी हमारे लिए खाने वाला स्वादिष्ट जो भी भोजन बनता है उसमें खट्टापन आ जाता है। आपने देखा होगा भटूरे जो बनाए जाते हैं उसमें खट्टापन और एक विशिष्ट स्वाद आता है, इसके पीछे ईस्ट या खमीर ही होता है। सो साउथ इंडियन फूड विशेषकर इडली, डोसा, इसके पीछे माइक्रोब्स ही होते हैं। सो बच्चों, one of the traditional drink that is usually used by the some part of the southern India. So this traditional drink is known as toddy, and
this drink is made by fermenting sap from palm by natural yeast. So sap means one type of liquid. So उसमें आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्लाइड में, एक चीरा लगाते हैं पाम पर और उससे जो सैप निकलता है, और देख रहे होंगे इस प्रकार से वेसल को टांग दिए जाते हैं, मटकों को या जो भी अलग अलग वेसल, और उनमें इन्हें कलेक्ट किया जाता है और कुछ समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसके बाद वो अपने आप बहुत ही एक फ्लेवर वाली एक ड्रिंक के रूप में तैयार हो जाता है, जिसे हम टोडी कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कई बार आप लोग गन्ने के जूस को खुला छोड़ के रख देते, आपको मदर ने कहा कि बेटा ये गन्ने का जूस पी लीजिए, और आप भूल गए पढ़ाई की वजह से, और आपने जब 5-6 घंटे बाद उसको याद आया तो फिर आपने पीना शुरू किया, तो जो गन्ने का जूस मीठा था उसमें अब खट्टापन आ गया। ये जो खट्टापन आता है, it is all due to the fermentation. So it is also being done with the help of microbes, means जो फंगस होता है, that is Saccharomyces cerevisiae, इसके स्पोर्स पाए जाते हैं everywhere, so they may be grow on the sugar rich substance and start to go the process of fermentation. So nowadays my students, there are some question being asked that is known as critical creative thinking based or matching question or reason assertion question. So such type of the question may be asked in your examination, and in the examination you have to match which microbes play which role. So now you will be able to understand, and now you will be able to match the what is the function of the microbes and which microbe do this function. So let us start another that is industrial process, that microbes may be used in the industrial process. सर, इससे पहले हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ें, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फर्मेंटेशन से ही जुड़ी हुई, यदि आप इजाज़त दें तो। सर, जैसे आपने उदाहरण दिया कि जब हम गन्ने के जूस को हम उसे खाली छोड़ दें और कुछ देर बाद उसका सेवन करें तो वो थोड़ा खट्टा हो जाता है, यानी फर्मेंटेशन उसमें अपने आप हो गया माइक्रोब्स की वजह से। पर जब हम कुछ पकाते हैं तो हम उसमें बाहर से यीस्ट, जैसे खमीरा आपने बताया, उसको ऐड करते हैं और फर्मेंटेशन जो है उसमें तब प्लेस लेते हैं। तो सर क्या फर्मेंटेशन का क्या टाइप है, जैसे क्या ये खुद हो जाता है फर्मेंटेशन, या फिर कई बार हमें खुद से भी कोई प्रोडक्ट ऐड करना पड़ता है फर्मेंटेशन में, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फर्मेंटेशन अपने आप हो सकता है और कौन सी चीज़ों के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है? जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया की जितनी भी शराब बनाई जाती है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाई जाती है। वन ऑफ द एजेंट दैट इज पॉपुलरली यूज्ड दैट इज द ईस्ट। तो जब ईस्ट ग्रो होता है, देयर आर सम बैक्टीरिया आल्सो that also do the fermentation, that is the lactic acid fermentation, butyric acid fermentation. So fermentation may be carried out by the help of the fungus, by the help of the bacteria, but we people usually in our home use the yeast or khamir for doing the process of fermentation. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जब fermentation होता है तो उससे बायोलॉजिकल जो yeast होता है उसमें एक जाइमेज एंजाइम डेवलप होता है, और जाइमेज एंजाइम जो होता है वो जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरे प्रोडक्ट में। जो भी शुगर सब्सटेंस होता है उसको आइदर एल्कोहल और आइदर अदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ फ्लेवर चेंज हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि we people are using the different variety of the cheese. That is the one of the cheese that is that have the large hole, and on the other hand there are the cheese that is quite compact. So different variety of the cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used. For example, you have seen the large hole in Swiss cheese that I have discussed with you in the previous slide or not. So I would like to tell you that large holes in the cheese that is due to the production of the large amount of the CO2 by a bacterium known as Propionibacterium sarmeni. So this is known as one type of the cheese.
as well as there is the rock-fired cheese are ripened by growing a specific fungus on them, so which gives them a particular flavor. So देखा होगा कि चीज में भी जो अलग अलग प्रकार का पनीर होता है, तो एक के पीछे तो प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्मिनाई होता है जो स्विस चीज कहलाता है, जी और दूसरा होता है रॉक फाइट चीज. सो now we are moving to the next, that is known as microbes in industrial process. So several things or several items or beverages as well as antibiotics are developed or are produced with the help of microbes. So even in industry, microbes are used to synthesize a number of the product valuable in a human being. We people are enjoying like the beverages and antibiotics. So these are a popular example. So for producing on industrial scale, means for large scale, we need a large vessel or one vessel that is known as fermenter. So in the fermenter, we people usually produce the large amount of the industrial product like beverages, like antibiotics. So usually one of the industrial product that is very popular, that is the different form of the beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum, vodka. So these all are the microbial products. So these all are produced in a large vessel that have several facility. So this is known as fermenter. There is the for the purpose, the same yeast that is known as Saccharomyces cerevisiae used for bread making. Same yeast, that yeast is behind the making the, that is known as beverages. So that Saccharomyces cerevisiae is known as beverages yeast or brewer's yeast, or same yeast Saccharomyces cerevisiae is used for making the bread. So it is known as brewer's yeast. So we can say that these processes were carried out in a large vessel that is known as fermenter. So here is the one of the fermenter you will be able to see, and this fermenter has a unique design, and it is made in such a manner that we can control the pH of the medium by the pH probe. We can control the temperature in the fermenter by the temperature probe. We can control the oxygen concentration by the oxygen sensor. There is the sampling point, and as well as there is the compressed air inlet also. And when stirring being done with the help of stirrer which have impeller, so if the foam is produced, so there is the facility to get rid of the foam or to destroy the foam with the help of the anti-foam facility. So there is the inoculation pipe from where the different substances were made it added. So this is the design of the fermenter, and fermenter is very useful thing. So you have seen in the various laboratory that it, my student have visited in the CSIR, CMAP, as well as in Lucknow there is the biotech park, as well as there is the CDRI, NBRI, and IITR. So there are some labs like CMAP and biotech park have the large fermenter or fermentation plants, so where such biological process being done, and with the help of the fermenter we will be able to produce several beverages, and these beverages are known as fermented beverages. So we can say that the alcoholic beverages are formed by the fermenting malt. So now a question being arise in your, what is malt or what is known as malting? So I would like to tell you in the next slide, but I would like to tell you that wine and beer are produced
without the distillation, whereas the whiskey, brandy, and rum are formed by the distillation. So now I would like to tell you what is malting. So malting is a biological process. So malting is a process of steeping, germinating, and drying grain to convert it into malt. So usually during the process of malting, the germinated barley grain is used, but at other time we will also use, or we may use sorghum, wheat, and rice seed. So, during the process of malting, there is a liquid extracted from the mashing process of the germinated barley or sorghum or wheat. So, during the brewing of the beer or whiskey, so the liquid that is extracted is known as wort, and wort contains the sugar, the most important being maltose, that will be fermented by the brewing yeast to produce the alcohol. So this is the summary of the process, that is the germinated barley grain usually produce amylase enzyme and starch that is found in the germinated barley grain. So it converts the soluble starch into the soluble sugar plus protein plus vitamin, and that is sugar is found in wort, and in presence of yeast, that sugar being converted into alcohol and CO2, and the alcohol that is known as beer. So usually beer contains less amount of alcohol. Now I am taking you to the journey of the antibiotics, and as Simran ji have said that मैम आपने अभी बताया था ना कि हम और आप लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते एंटीबायोटिक के बिना, और ये एंटीबायोटिक्स एक ऐसी वंडर ड्रग के रूप में हमारे आपके जीवन को बदलने के लिए 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसको खोजा था, और ये एक सेरेंडिपिटी अर्थात डिस्कवरी बाय चांस, एक प्रकार की वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर काम कर रहे थे, एक बैक्टीरिया पर को ग्रो कर रहे थे वो पेट्री प्लेट में, और वो अपनी पेट्री प्लेट को शाम को छोड़ के चले गए अपनी प्रयोगशाला में, और दूसरे दिन आए तो उन्होंने उस पेट्री प्लेट में देखा कि बैक्टीरियल कॉलोनी सारी जगह नहीं ग्रो हुई हैं, बल्कि किसी किसी जगह पर क्लियर जोन पाया जा रहा है। जब उन्होंने उस जोन का इन्वेस्टिगेशन किया, उसको अच्छे से समझा, तो पता चला कि वहाँ पर एक विशेष प्रकार के फंगस ग्रो हो गए हैं और वो एक सबस्टेंस सिक्रीट कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि ये ऐसा सबस्टेंस है जो बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है, अर्थात उसको उन्होंने बताया कि ये एक प्रकार का पेनिसिलिन, जो आप जानते हो आज के दौर में एंटीबायोटिक्स। सो जैसा कि नाम ही बता रहा है एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, इट इज ए ग्रीक वर्ड, एंड बायो मीन्स लाइफ, अर्थात एंटीबायोटिक एक प्रकार के ऐसे सबस्टेंस होते हैं, केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। एंड सबसे पहले टर्म एंटीबायोटिक्स सालमान वैक्समैन ने दिया था, और ये केमिकल सबस्टेंस ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब वो एक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पेट्री प्लेट में कुछ विशेष प्रकार की माउल्ड ग्रो हो गई है, और जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को उस जगह ग्रो नहीं करने दे रही, क्लियर जोन है। और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस ग्रो हो गया है जो पेनिसिलिन सिक्रीट कर रहा है, और फिर उन्होंने उससे एक्सट्रैक्ट किया, और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर को अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने बताया, केमिकल स्ट्रक्चर को पेनिसिलिन की। और आज के दौर में हम लोग बिना एंटीबायोटिक की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हमारे जीवन को बदलने वाली एक खोज थी, और जो हम और आप लोग सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आज के दौर में पेनिसिलियम नोटेटम के अलावा पेनिसिलियम क्लाइसोजेनम से कमर्शियल लेवल पर एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक एक प्रकार की चमत्कारिक दवाएं हैं। आप इससे सहमत होंगी सिमरन जी? और अगर हमें और आपको बीमारियों से बचना है, या हम और आप लोग जिस प्रकार से आज
आपसे जुड़े हुए हैं हेल्दी, कोरोना काल में भी हम लोग सर्वाइव कर गए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं से अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स थी। ऐसे ही बैक्टीरिया के द्वारा एक विशेष प्रकार की एक मेडिसिन जिसे हम स्टेप्टोकाइनेज कहते हैं, और यह स्टेप्टोकाइनेज हार्ट पेशेंट में जिनमें कि कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज हो रहा है उनके पल्मोनरी आर्टरी में, अगर क्लॉट डेवलप हो जा रहा है, तो ये स्टेप्टोकाइनेज दैट इज being produced by the streptococcus bacteria. So streptokinase is used as a clot buster for removing clot from the blood vessel of the patient who have undergone myocardial infarction. So now such type of the question also being asked. So before going to the question, I would like to so you detail of the sum of the antibiotics, like streptomycin is obtained from the Streptomyces griseus, chloramphenicol from the Streptomyces venezuela, tetracycline, streptomycin, aureofaciens, and erythromycin, streptomycin, erythrans, and cephalosporin, acrimonium, and bacitracin is the Bacillus subtilis and gramicidin Bacillus brevis. So beside bacteria, there are some rare fungi which are also source of the antibiotics, and antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease like plague, like whooping cough, काली खांसी, कुकुर खांसी, बच्चों में होने वाली गलघोंटू वाली बीमारी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा लाखों लोग पहले काल के गाल में समा जाते थे, बड़ी बड़ी महामारियां फैलती थी, वो उन पर हमने विजय पाई, और कोरोना काल में भी एंटीबायोटिक ने हमारी आपकी मदद की. सो टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स. आर यू एग्री, सिमरन जी? यस. All our viewers as well, and also with that I would like to inform you that in the conversation we are still left by the last 10 minutes. So if viewers, if you have any queries regarding our today's topic, where we are discussing about an important concept, that is microbes in human welfare, then do drop your queries in the comment section of NCRT official. Yeah sir. Yes, ma'am. So my students, nowadays so many type of the antibiotics were developed, and but I would like to also tell you that knowingly or unknowingly, when without the prescription of doctor, we people usually take the antibiotics. So I am requesting you, please do not do so. बिना डॉक्टर की सलाह के आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे, क्यों? या फिर हम और आप लोग कई बार क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि भाई सुबह शाम या दिन में 3 बार आपको लेना है, और फिर हम लोग बीच में ही एंटीबायोटिक्स को लेना छोड़ देते. तो यह भी एक बैड हैबिट है. इसकी वजह से ये देखा गया है कि जो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बैक्टीरिया हो सकता है उस समय कुछ हद तक कंट्रोल हो गया हो, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है. तो इसलिए पूरा कोर्स लेना चाहिए, नहीं तो फिर वही बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से हमें और आपको परेशानी का सबब बन जाता है. और आपने आजकल सुना होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी एक नाम सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे बैक्टीरिया भी ग्रो हो रहे हैं जिन्हें हम सुपर बग कह रहे हैं, अर्थात दे आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स सो मैनी एंटीबायोटिक्स. मतलब हम और आप लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, और एंटीबायोटिक्स से वो बीमारी जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रही वो सही नहीं होती है. सो ये प्रॉब्लम भी अब हमें और आपको देखना पड़ेगा. इसलिए दुनिया इस समय नई नई एंटीबायोटिक्स तो खोज ही रही है, साथ में ऐसी भी दवाओं की तरफ जा रही है जैसे बैक्टीरियोफेज बेस्ड मेडिसिन, कि हम ऐसे नेचुरल एनिमी तैयार करें जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को किल कर देता है. तो क्या भविष्य में बैक्टीरियोफेज वायरस से भी ऐसी दवाएं बनाई जा सकेंगी? हो सकता है कि आप बच्चे आगे चल के शोध करें और हमें और आपको वो सब दवाएं देखने को मिलें. सो हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सो मैनी केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, like alcohol, like enzymes.
So you will be able to see that so many Aspergillus niger. It is a fungus that is producing the citric acid. So in the exam you will be asked the commercial source of the citric acid, that is the Aspergillus niger, that is a fungus. There is a Acetobacter aceti, it produces the acetic acid. One of the bacterium that is known as Clostridium butylicum, it produces the butyric acid. And Lactobacillus, a bacterium that it produces the lactic acid, and yeast is used for the commercial production of the ethanol. So ethanol is a common name, आप जानते हो शराब जितनी भी होती हैं ये इथेनॉल के ही अलग अलग रूप होते हैं. सो हम कह सकते हैं कि ईस्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग जगह जगह आप सुन रहे हैं. Saccharomyces cerevisiae, it is used for the commercial production of ethanol. Microbes are also used for the production of the enzymes. Yes, आपने enzymes का नाम सुना होगा. Usually enzymes are made up of the protein and these are known as biocatalysts. In class 11 you have studied the enzymes, but there are so many microbes which are also used for the production of the enzymes. So one of the that is known as lipase are used in the detergent formulation and are helpful in removing the oily stain from the laundry. हम और आप लोग जो आज नए नए डिटर्जेंट उपयोग कर रहे हैं और उसके आप ऐड देखते हैं, उसमें कहा जाता है ग्रीज लगा हो अगर कपड़ों में या कोई भी ऑयल लगा हो, तो आज के डिटर्जेंट कैपेबल हैं वो ऑयल या ग्रीज या जो भी फैटी सब्सटेंस को निकाल देते हैं. उसके पीछे यही लाइपेज होता है, बिकॉज लाइपेज usually produced with the microbes and it will be helpful in removing oily stain. My student, you have noticed that bottled fruit juice brought from the market are clear as compared to the those made at home. आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो जूस बनाती हैं और जो जूस आप मार्केट से खरीद के लाते किसी भी ब्रांड का, तो मार्केट वाला जूस क्लियर होता है, लेकिन आप घर पे जो बनाते हैं तो उसमें देयर आर सो मेनी सस्पेंडेड फाइब्रस मैटर आर फाउंड. सो ये कैसे होता है कि जो मार्केट से आप बॉटल्ड जूस लाते हैं वो क्लियर होता है. so, इसके पीछे भी बच्चों माइक्रोब होता है. सो देयर आर सो मेनी माइक्रोब्स बिकॉज द बॉटल्ड जूस आर क्लैरिफाइड टू those we can say that with the help of the microbe, because usually the fruit have the middle lamella, because fruit usually produced from the plant and fruit have the middle lamella, and middle lamella is made up of the calcium magnesium pectate. So the bottle juice that you people usually buy from the market, so it is produced with the help of a pectinase and protease. So pectinase and protease enzymes usually clarified all the suspended material that is usually belong to the middle lamella. So हम और आप लोग जब घर पे बनाते हैं तो वो नहीं हो पाती प्रोसेस, तो उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल आपने देखे होंगे. One of the thing I have already discussed with you, that is the streptokinase. It is produced by the bacterium that is Streptococcus and modified by the genetic engineering. इसके बाद next chapter हम लोग पढ़ाएंगे आपको genetic engineering या biotechnology. So genetic engineering में आजकल ये के द्वारा इसको modify कर गया है और ये clot buster के रूप में यूज होता है for removing the clot from the blood vessel of the patient who have undergone myocardial infarction. So infection, myocardial infarction लीडिंग टू द हार्ट अटैक, एंड ऐसी दवाएं अगर हम ऐसे इंजेक्शन लगा दें जिससे कि क्लॉट खत्म हो जाए, ये पॉसिबल हो गया है. दैट इज द विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. देयर इज वन ऑफ द बायोएक्टिव एजेंट दैट इज द we people are using, that is you will be able to see, that is known as cyclosporin A. So this bioactive agent is used as an immunosuppressive agent. You have heard about when a person some vital organ
get failed or they are not able to do the function, like usually in case of the renal failure, when the kidney stop the function of doing what is assigned to them, or liver or some other part. So usually the organ transplantation is done. आपने Yeah. देखा होगा किसी डोनर से ऑर्गन लिया जाता और फिर उस व्यक्ति को दिया जाता, so इसे कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और बच्चों आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में कि जब हम कोई भी किसी भी व्यक्ति का ऑर्गन लेके और दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हमारा शरीर उसको फॉरेन मॉलिक्यूल समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। मतलब जो ऑर्गन किसी व्यक्ति का डोनर का लेके और उस व्यक्ति में हमने ट्रांसप्लांट किया जिसको जरूरत है, तो व्यक्ति जो होस्ट का शरीर एंटीबॉडी बनाएगा और जो ऑर्गन हमने उसको ग्राफ्ट कर रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको एंटीजन समझेगा और उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देयर इज ए ड्रग नोन एज साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज बीइंग यूज्ड। सो वो क्या करती है, जाके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, एंड साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। So during the organ transplantation, it is used and it is produced by the fungus known as Trichoderma polyosporum. So I would like to tell you one more bioactive agent. Yes, sir. I will request you to please make it the last concept for our viewers to understand, as we have certain time constraints. Yes, yes. So 1 or 2 minutes. So I am going to finish. Sure. So there is one biological bioactive molecule that is statin that is produced by the yeast. That is the Moniscus purpureus. So it has a wonderful activity. It is found that it is used as a blood cholesterol lowering agent. So nowadays, due to sedentary lifestyle and due to changing habit, we people are eating so many of the oily things. So our blood cholesterol level is increasing. There are so many problems related with the cardiac failure and cardiac problems are seen. So there is the statin which can be used to lower the blood cholesterol, and statin is acting by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol, and in this way it will be able to reduce the cholesterol. So in the last I would like to show one of the slide in which you will be able to summarize what is the biological or bioactive substance and what is the role of the bioactive substance, like statin is used for the for which purpose. So such type of the question being asked, these questions are known as matching question. Like I have told you that the statin has the activity of the removal of the lowering of the blood cholesterol, lowering of cyclosporin A being used as an immunosuppressive agent. Streptokinase may be used for the removal of the clot from blood vessel. That is why it is known as clot buster. And lipase nowadays being used in the detergent to remove all of the oil stains. So now I am going to summarize whole chapter. Friends, microbes are our friends as well as foe. Previously we people are thinking about that there are the microbes that are causing disease, or we have the concept that all microbes are harmful. But now you are in the position that microbes are highly useful, and there are so many roles that our microbes are playing, and due to which we people are enjoying the benefit of lot of the product. And of course, sir. And I do believe that by now our viewers will be able to understand and identify the microbes that are present around us, and also how they could help in human welfare and the kind of good microbes that are there around us. Thank you so much, sir, for providing us all the important details regarding this topic. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you to all the viewers who have connected with NCERT for this particular session of biology. We have a lot of sessions for all our viewers. You can also watch our repeat telecast. Besides, if you would like to watch any particular video regarding a specific topic, then also you can mention it in NCERT official's comment section, and through this platform the different topics that you would like us to bring and discuss in our sessions, write about them also to us.
So thank you once again to all the viewers and our expert for the session, Mr. Sushil Kumar. Stay connected to NCRT. Keep watching PM eVidya channels. Namaskar.